गणानाम् त्वा गणपतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव दयानो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अवितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयोरात्रियोज्याम् यास्यते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षशतेषु दे निशीय शल्याढामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेतम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाम् जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय विषेमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्या
पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निर्व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्योमुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुम्भदेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो
ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चानन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काठ्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः षष्ट्याय च पेन्याय च नमः श्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिलते च प्रकिलते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्वत्केभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रम् नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्
मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुदमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते भोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडा दरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेवस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव धर्मे वृक्ष आयुधम् निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुम् नेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाश्यतिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्यतिकण्ठादिवकुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिन् जला नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखादक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदेचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवा विमर्शनः
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. जय हो मूषिकवाहन. जय हो मूषिकवाहन. जय हो मूषिकवाहन. जय हो मूषिकवाहन. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. पार्वती तनया सिद्धिविनायक. पार्वती तनया सिद्धिविनायक. पार्वती तनया सिद्धिविनायक. पार्वती तनया सिद्धिविनायक. शरणं शरणं विघ्नहरणं. शरणं शरणं विघ्नहरणं. शरणं शरणं विघ्नहरणं. शरणं शरणं विघ्नहरणं. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. जय हो मूषिकवाहन. जय हो मूषिकवाहन. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. पार्वती तनया सिद्धिविनायक. पार्वती तनया सिद्धिविनायक. शरणं शरणं विघ्नहरणं. शरणं शरणं विघ्नहरणं. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. शिवनन्दन प्रथम वन्दना. हे शिवनन्दन प्रथम वन्दना. शिवनन्दन प्रथम वन्दना. जय हो मूषिकवाहन. हरे साई 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 हरे हरे. 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 हरे बाबा
बाबा साई बाबा हरे 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 साई 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 हरे 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 साई 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 हरे हरे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे हरे साई 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 हरे 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 साई 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 हरे 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 बाबा साई बाबा हरे 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 बाबा साई बाबा हरे 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 साई 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 हरे 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 साई साई हरे हरे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे सद्गुरुनायकं साईनाथं भजे हरे साई 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 हरे हरे पूर्णब्रह्म अवतारा साई पूर्णब्रह्म अवतारा साई पूर्णब्रह्म अवतारा साई पूर्णब्रह्म अवतारा साई सकल जगत आधारा साई सकल जगत आधारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई
अवतारा साई सर्वधर्म अवतारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई सकल जगत आधारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई अल्लाह ईशु नामा साई बुद्ध महावीर नानक साई सभी भक्तों के बाबा साई सर्वधर्म अवतारा साई सर्वधर्म अवतारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई दीन जनावनि वरदायिनी दीन जनावनि वरदायिनी ज्ञान स्वरूपी नारायणी ज्ञानस्वरूपी नारायणी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी वेदरूपिणी वागीश्वरी वेदस्वरूपिणी वागीश्वरी प्रेम प्रदायिनी परतीश्वरी प्रेम प्रदायिनी परमेश्वरी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी दीन जनावनि वरदायिनी दीन जनावनि वरदायिनी ज्ञान स्वरूपी नारायणी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी
जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय शिरडीश परतीश राम जय प्रशान्ति साईश 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 राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि 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 राम जय सुन्दर साईश राम सुन्दर साईश राम जय सुन्दर साईश राम सुन्दर साईश राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम जय शिरडीश परतीश राम जय प्रशान्ति साईश राम जय शिरडीश परतीश राम जय प्रशान्ति साईश राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि राम मङ्गल पावन नाम जय सुन्दर वैदेहि राम जय सुन्दर साईश राम सुन्दर साईश राम जय सुन्दर साईश राम जय सुन्दर साईश राम जय कौसल्यानन्दन राम परमानन्द आनन्द राम हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी तुम हो मेरे भगवान तुम हो मेरे भगवान तुम हो
दुख भंजन सहारा दो मुझे, दीन दुख भंजन सहारा दो मुझे, दुख भंजन सहारा दो मुझे। ओ मेरे साईं भगवान, ओ मेरे साईं भगवान, ओ मेरे साईं भगवान, ओ मेरे साईं भगवान। हृदय मंदिर में आओ साईं मेरे, मंदिर में आओ साईं मेरे, हृदय मंदिर में आओ साईं मेरे, मंदिर में आओ साईं मेरे। दीजो कृपा वरदान, दीजो कृपा वरदान, दीजो कृपा वरदान, दीजो कृपा वरदान। तुम हो मेरे भगवान, हो मेरे भगवान, तुम हो मेरे भगवान, हो मेरे भगवान। हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी, अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी, तुम हो मेरे भगवान, हो मेरे भगवान। दीन दुख भंजन सहारा दो मुझे, दुख भंजन सहारा दो मुझे। ओ मेरे साईं भगवान, ओ मेरे साईं भगवान। हृदय मंदिर में आओ साईं मेरे, मंदिर में आओ साईं मेरे, दीजो कृपा वरदान, दीजो कृपा वरदान। तुम हो मेरे भगवान, हो मेरे भगवान, तुम हो मेरे भगवान, हो मेरे भगवान। हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी। मंदर गिरिधर मदन मनोहर, मंदर गिरिधर मदन मनोहर, मंदर गिरिधर मदन मनोहर, मंदर गिरिधर मदन मनोहर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,
मधुसूदना हे माधवा मधुसूदना मुरली गान विलोला मुरली गान विलोला मंदर गिरिधर मदन मनोहर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर गिरधारी गिरधारी गोवर्धन धन गिरधारी 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 गोवर्धन धन गिरधारी माधवा मधुसूदना मुरली गान विलोला मुरली गान विलोला मंदर गिरिधर मदन मनोहर जय हो जय हो जय हो जय हो
चित चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल वर्धन धर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. I had a first-hand experience, with him about the significance of writing letters to Swami.
old hostel when Pallav, Shailesh, myself, all of us, we finished our postgraduate studies. Swami told us to stay in the old hostel. So every morning the agenda was clear. 5 o'clock we used to grab the harmonium, run away to Nagar Sankirtan, whole day. Night without fail, till 9 o'clock or 9:30 we used to have a satsang. And then we used to go to sleep. And that particular night's topic was, why do we write letters to Swami? And most of us actually felt, that see, it is humanly impossible, to read so many letters. Physically, Swami may be God, but his body is still human. And human body cannot read so many letters in one day. Definitely he must be skipping a few letters. Definitely we don't think he is reading all the letters. But a deeper truth was escaping us. So then Swami, everything was over. I think we went to sleep in the night. Morning, when generally Dilip used to go away to do his MBA program, I used to do the door duty. So one group of devotees had come, and Swami, whenever the devotees or children come, Swami used to give them pencils, photographs of Swami and vibhuti packets. And sometimes after the entire distribution was over, I used to get it back and get it inside and put it in the inner interview room and come out. Sometimes Swami used to be seated on the chair by the time I used to come in, reading letters. So sometimes when he sits there, he used to close the door and sit, which means I am expected to stay there. Sometimes he used to leave the door open, which means I am expected to go out and close the door behind me. So that day when I came, the door was closed. So I went and stood near the door waiting silently. So Swami has a knack, See, when you have some kind of doubt, he will ensure that the doubt multiplies. What he did was, the moment he came, he took out a bunch of letters. Previous night's topic was Swami doesn't read all the letters. He made it a point to pick up a really hefty bunch of letters, took it like this, 1, 2, 3, 4. He started throwing in the dustbin one by one. So I was thinking, yes, I was right. Last night I was vociferously telling everybody Swami can't read all the letters. There he is throwing all the letters, and I was smiling like this. Swami was reading and suddenly stopped and he looked at me like that. The chill down the spine, that is what. Imagine, I just finished his thought. Swami stopped and he looked at me like that, upstairs. Emira, doubts vastunaya? He asked. Are you getting doubts? I said, no, Swami, no doubts. Then he said, come here. Then I went and he put his hand on my shoulder and he said, never lie to your guru. And I just hung my head down. Then he said, why are you scared what your doubt is? If your doubt is out of genuine interest to learn, I welcome it. Tell me what's your doubt, he said. When I said, Swami, like this, we had a discussion last night. He said, yeah, I was hearing it. I was hearing all of it. You only said, that Swami doesn't read all the letters. I said, yes, Swami. Then Swami said, you come here. Then he took out a bunch of letters and he unfolded them like that and he said, pick up any one letter. So somewhere inside I took a totally normal white envelope, hundreds and hundreds of letters Swami gets. Nothing was written on it. Plain normal white envelope. There was no handwriting also. In case you think, that Swami has recognized the writing, there was nothing. It was plain. And Swami said, go back to the door. So I went back to the door. Swami said, open it and read it. I said, Swami, but the letter is for you. He said, I am only telling you, you read it. So I went to the corner and Swami was continuing reading his own letters. And after 5 minutes he looked up, he said, did you read it? I said, yes, Swami. You will not believe it. He sat there and he said, this letter is from Mr. Mukhopadhyaya in Calcutta. His son came to me, he came with his son to me last year because his son was having a brain problem which the doctors couldn't cure. I gave him a vibhuti at that point of time and I told that his son will be perfectly fine. That boy is now going to school totally normally. Mr. Mukhopadhyaya has written that letter thanking me. I just threw the letter and went and fell at his feet. And he said, why? Why are you sad? I said, no, Swami, it was my mistake. I did a great sin by doubting you. Then he said, don't. Your intention was not to criticize me or expose me or something like that. Your intention was a genuine thing. You wanted to know. It is my responsibility to get rid of that doubt for you. Who else will do it except for your guru? Then that is when a deeper truth, which I told you about, dawned on me. What is that truth? See, the letter doesn't matter. Whether he reads the letter doesn't matter at all. Because he already knows. So then taking that, sometime later I asked him that, Swami, you remember that experience you gave me? He said, yes. Then I said, but Swami, why is it that sometimes you expect us to write letters to you? In fact, when I came to you several times from Parthi, you would ask me, have the boys given any letters? It is obvious, that you want to letters. So how is it that you expect us to write them? Then Swami said, see,
when this physical body is here, it is for you to take full advantage of it. Then he pointed at me, he said, see, when you write the letter, I know that when you write the letter, you feel that you are talking to me. Am I right or wrong? I said, yes, Swami. Because that's a fact. He said, like that, people have their own feelings, which gets evoked when they write a letter to Swami. I respect that feeling and take the letter. Then see how deeply he goes into each one of his actions, Then I understood the entire history of what is letter, why should it be written to Swami, and what does Swami do with the letter. Entire thing came out in one single shot to me. And that's why even now, I write a letter to Swami and I put it at his throne, in our house. Om Shri Sai Ram. As part of our special prayers for the health and well-being of our brothers and sisters around the world, we have Swami chanting the Gayatri Mantra, and then we will have the Mrityunjaya Mantra. Please join in the chanting if you can. Sai Ram. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे स्वामी Hare
परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमात्मैष्णात्मोक्षाप्रदानं Om Shri Sai Ram. Mill Hill Sai Centre hopes you enjoyed today's offering of bhajans. Thought for the week. Virtuous conduct also ensures mental peace, and that in turn saves you from many a physical and mental illness. If you overstep the bounds, miti, you will not progress, gati. Coming to the topic of physical illness, I must tell you that you must practice moderation in food, drink, sleep, and exercise. Good food taken in moderate quantities at regular intervals, that is the prescription. Pure, wholesome, sattvic food promotes self-control and intelligence more than passion-producing, rajasic, and impure, tamasic food. For spiritual aspirants, pure and wholesome food is very necessary. Subtle, invisible thought forms can pass from one person to another through food. Hence, you must be very careful about food, especially where you are proceeding Godward through the steep path of yoga. Sleep too should be regulated and moderate. It is as important as work and food. Remember also that dress is primarily for protection against heat and cold, not for vain display, even at the cost of health. Jai Sai Ram. Om Sri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. These are the announcements for Sunday, 13th of February. Shivratri celebrations. With the blessings of our beloved Swami, we will be celebrating the most auspicious night of Shivratri on Monday, the 28th of February, from 9:30 p.m. to midnight. Our regular school venue is not available that night, hence we are joining the Region 3 celebrations to be held in person at the Oxywood Primary School, Watford, WD 19 7SL. The program will include Vedam, Stotrams, Rudrabhishekam, and Bhajans. Prasadam will also be served. All are welcome. For further details, please contact the Centre Chair. Volunteers for Shivratri celebrations. We are looking for about 10 volunteers
on the Shivratri day of Monday, the 28th of February, to help in various areas, including registration, seating, altar arrangement, car park, and food serving. Interested youth and adults are requested to contact Surabhi Aunty or Shankavi from the service wing. Shivratri Sadhana Program. Shivratri is a very auspicious and powerful night for every Sai devotee and every spiritual aspirant. In order to better prepare us for this day, each year we undertake a focused sadhana program. This year, starting Monday the 7th of February, we've been undertaking a 21-day sadhana program where we will be chanting the powerful Shiva Panchakshari mantra, Om Namah Shivaya, 108 times every day. You can do this any time of the day convenient to you, but we recommend doing this at the same time each day. Study Circle. We are having our study circle online on the second Sunday of each month from 2 p.m. to 3 p.m. We are currently going through the Prashanti Vahini, part of the Vahini series of books written by Swami. The next session will be today afternoon, Sunday the 13th of February, from 2 p.m. to 3 p.m. A Zoom link will be sent on the Mill Hill Signal Group. National Service Project. Sri Satya Sai Service Organisation of UK had initiated a nationwide project to provide essential toiletries to boys and girls in Syria. Mill Hill Sai Centre is grateful to Swami for the opportunity to participate in this seva. We express our gratitude to Swami and our loving appreciation to all of you for your generous contributions which helped us exceed our target. The items will be aggregated from all over the UK and shipped to Syria later this month. Feedback. If you have any comments, feedback, or suggestions regarding the programs being organised by the Mill Hill Sai Centre, or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or on 077 22 197 830. That brings us to the end of this morning's program. We pray all of you and your loved ones stay safe. May Swami be with all of us and bless us immensely. Jai Sai Ram.